Welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Business Law. Hello learners, today we will talk about law, the introduction part. Under that, let's know about Indian law. On your screen you can see the symbol of Indian law system, which ultimately talks about Satyamev Jayate. It contains 4 lions. When I talk about Indian law system, it is a common law system all over India, but it is a sort of hybrid legal system. Hybrid legal system means it is a mixture of different kinds of law, such as civil law, common law, criminal law, customary law, Islamic ethics, religious law. Religious law such as Hindu people have different law, Hindu law. Muslim people have Islamic law. Parsis have Parsi law and various acts under that. Indian law system have its roots from a British colonial rule. Britishers are the people who ruled India and the effect still can be seen in Indian law system. Since the drafting of Indian Constitution, Indian law also adheres to the United Nations guidelines on human rights law and environmental law. Human rights law and environmental law basically talks about the rights of humans along with protecting and preserving, sustaining the environment around us. The Indian Constitution are the prime base. On the basis of Indian Constitution, other laws such as criminal or a civil law is framed. Indian personal law is fairly complex. What is personal law? It is kind of religious law. Different religions have their own laws, with each legal adhering to its own specific laws. As I said just now, Hindus have Hindu law, Muslims have Mohammedan law or a Islamic law. So let's go further and see the Constitution of India. Now on your screen you can see the various things. On the top it is written Constitution of India. Constitution of India is the prime most apex law. On the basis of Constitution of India, other laws are framed. To cut the whole story in a short, other laws such as IPC, CRPC, CPC or a tort cannot go beyond Constitution of India. Constitution of India is the sky which other laws cannot cross. Now on your screen you can see the Constitution of India. Below that, currently, I am talking about the current scenario. Currently, there are 448 articles in 25 parts with 12 schedules, 5 appendix under Constitution of India. Till now, 101 amendments are done under Constitution of India. When I talk about Constitution of India, only Constitution of India contains article. There is no sections under Constitution of India. Apart from Constitution of India, all the laws contains sections. Now let's go below that and let's go toward the IPC. IPC is Indian Penal Code which came in 1860. It came in effect and it generally focuses on criminal laws in India. Let's see. There are 576 sections and 23 chapters under IPC. IPC basically focuses on criminal law, which rules should be applied, which criminal activities should be cut short, etc. things are under IPC. If I talk about rape, rape is a criminal offense, not a civil offense. Let's say dacoity or theft or robbery, these things are criminal in nature. So if anything or any activity which is criminal in nature, we will go for complete analysis under IPC. IPC currently contains 576 sections along with 23 chapters.
What is chapters? Chapters are basically topics. Under that, various section comes. For example, if I say rape, rape is a chapter in IPC. Rape contains various other information that that particular person is what, how things should proceed, and various other things. Let's go further and see the next part, that is CRPC. CRPC is Code of Criminal Procedure 1973. CRPC contains 484 sections, 2 schedules, and 56 forms. The sections are divided into 37 chapters currently. Students, if you go on a Google and you will search, maybe you will get the information from the beginning of that particular act. But by passing of days and slowly and steadily, there are plenty of amendments done in a different acts. So we are talking from the current point of view, and currently there are 484 sections. Now pay attention. See, what is CRPC? CRPC is Code of Criminal Procedure. In IPC, it is written what is particular crime is all about. But in CRPC, it is written how that particular criminal activity should be given punishment, and how that particular criminal activity should be proceeded, should be given rules, or I can say should be given punishments, right? Should be given punishments in which way. All these things are given in CRPC. So IPC is just written words that रेप क्या होता है या थेफ्ट क्या होता है, बट CRPC में ही बताया गया है कि रेप हुआ तो उसके रूल्स क्या होंगे, कौन सी सेक्शंस लगेंगे, किस तरह से प्रोसीजर होगा। या थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, तो आईपीसी में लिखा गया है चोरी क्या है, और सीआरपीसी में लिखा गया है उस चोरी होने पे कितनी सजा मिलेगी या कौन से सेक्शंस, कौन सी धाराएं लगेंगी। लेट्स गो फर्दर टुवर्ड द सीपीसी स्टूडेंट्स. सीपीसी इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर which came in 1908. The code is divided into two parts. The first part contains 158 sections and the second part contains the first schedule, which has 51 orders and rules. Students, this particular Code of Civil Procedure 1908 contains two parts. First part will give you information about what those activities are, and the second part will give you information about what should be done in what situation. So these are the three most important and the apex apex places where IPC deals with criminal law, CRPC deals with the procedure, that criminal procedure of that particular crime, CPC deals with the civil procedure, and now comes the tort. What is tort? Tort is just a wrong. You have to pay attention over here. Tort is not an एक्ट. यहां आपको सेक्शंस नहीं मिलेंगे, चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, शेड्यूल्स नहीं मिलेगा, सबसेक्शन नहीं मिलेगा. इट इज जस्ट अ टॉट. सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली? देयर आर नो सेक्शन. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन अ केसेस. व्हाट इज केसेस? ध्यान देना. मान लीजिए कल मेरी पेंसिल गुम गई और पेंसिल ढूंढते ढूंढते मुझे वो पेंसिल नहीं मिलती है, तो क्लास में टीचर रूल बना सकती है कि पेंसिल गुमेगी तो सबका बैग चेक किया जाएगा. क्यों वो रूल बना? क्योंकि पेंसिल गुमा. तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई होती है स्टूडेंट्स. जब कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए नया रूल बनाया जाता है. तो दैट इज टॉट. टॉट सिंपली मीन्स समथिंग रॉन्ग. टॉट इज अ लैटिन वर्ड और यहाँ पे इसको हम रॉन्ग की तरह देखेंगे. एक एग्जाम्पल से देखते हैं टॉट क्या होता है. मान लीजिए मेरा एक बंगलो है. बंगलो के बाहर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है. 4-5 लड़के बाहर से जा रहे हैं. उन्होंने मेरा स्विमिंग पूल देखा और जस्ट वो आए मेरे बंगले के अंदर. गार्डन है, स्विमिंग पूल है, वहां वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं.
पूरा वहां पे पूरे टाइम 1-2 घंटे उन्होंने बिताया और ये सारी एक्टिविटी वो लोग करके चले गए। मैं घर पे नहीं थी, मैंने घर आई, सीसीटीवी में मैंने देखा कि ये 4 या 5 लड़के हैं जो लोग मेरे घर के अंदर घुस के बस नहा के स्विमिंग पूल में चले गए। अब आप सोचिए, क्या उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया? नहीं, उन्होंने कुछ भी क्रिमिनली रॉन्ग नहीं किया है। क्या उन्होंने कुछ मेरा चुरा लिया, सिविल किया, कुछ मेरी प्रॉपर्टी चुराई है? नहीं, उन्होंने वो भी नहीं किया है। तो इसे कहेंगे टॉर्ट, ट्रांसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसी की प्रॉपर्टी में जब आप घुस जाते हो, वहां रहते हो, लेकिन कुछ लेते नहीं हो, लेकिन आप कर तो गलत रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी में घुस के। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्ट एंड इट हैव इट्स ओन system, its own method of correction. So these are the 4 laws, but apart from these 4 laws, there is an apex law, that is Constitution of India, and all the laws cannot go beyond Constitution of India. Constitution of India वो लक्ष्मण रेखा है जिसके पार कोई और लॉ नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो while going toward the law part. Let's go further and focus on these 2 important people. Parties, of course, parties in the case, in a case. First is the plaintiff, second is a defendant. Who is plaintiff? Someone who makes a legal complaint against someone else. जो कंप्लेन करता है वो प्लेंटिफ है, जो खुद को डिफेंड करता है वो डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे कैसे होता है, मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मेरी कोई कीमती चीज चुरा के लेके चले गए, तो ये आईपीसी में एक थेफ्ट का केस बनेगा। ओके, तो मैं आपके मुझे पता है आपने किया है, मान लीजिए आप मेरे नेबर हैं, मुझे पता है कि ये आपने किया है, मैंने आपके ऊपर केस कर दिया। ओके, तो मैं बन गई प्लेंटिफ और आप बन जाते हैं डिफेंडेंट। सो दिस इज द 2 पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर केस। और नीचे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच टॉक्स अबाउट विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, republic, etc. etc. तो ये आप अपनी हर एक बुक पे देखते होगे। स्कूल्स में जो बुक होती है या 11th-12th की बुक होती है, मोस्टली इसमें वो बुक्स में ये पर्टिकुलर 2 पेजेस तो रहते ही हैं। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट। सो see you in next lecture. I hope you are doing your studies well, and remember, knowledge is the most important thing.